Hello everyone, myself PIYUSH, and today we are going to discuss about various experiment of the subject of microprocessor and microcontroller which comes in 6th semester. So directly let's get into it. So today we are going to see the experiment number 2, that is to study the assembler directives. Okay, so what are the theories? What we are going to see in this assembler directives? So first of all we need to understand how we are going to write a code, right? So for writing our code we need several things to keep in our mind. हमें कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी है, जिस तरह से 8085 डेटा टाइप एंड डायरेक्टिव्स. सो क्या है 8085 के डायरेक्टिव्स? द 8085 माइक्रो कंट्रोलर हैज ओनली वन डेटा टाइप्स. सो ऐसा कर सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सिर्फ एक भाषा समझ सकता है और उसके पास सिर्फ एक डायरेक्टिव है. डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि वो कौन सी बीट और कितनी मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर सकता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is 8 bit and size of each register is also 8. So we have only 8 bits of storage, right? So it is the job of programmer to break down the larger number that is more than 8 bits. So if one data that is larger than the 8 bits, so it programmer need to break down that data and then write up in such a way to store that data into the 8 bit. So we can say that from 00 to FFH, okay, or we can say from 0 to 255 in decimal. If we are going to talk in hexa, then 00 to FF in hexa. And if we are going to talk about decimal, अगर हम डेसिमल में बात कर रहे हैं तो 0 to 255, right? So to be proceed by the CPU, the data used by 8085 can be positive or negative, but how we are going to know, or how the computer is going to know if the data is positive or negative? So it is the responsibility of the programmer to store that data, or we can say to break down that data and store in such a way that the computer will understand this data is positive or negative or more than 8-bit data, right? So how we are going to do that, we are going to see in the this session. So second thing that we are going to see, that is the DB. So define byte, DB means define byte. How we are going to define that byte, हम उस बाइट को किस तरह से डिफाइन करते हैं. द डीबी डायरेक्टिव इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा डायरेक्टिव इन द असेंबलर. सो इट इज द मोस्ट वाइडली यूज. कॉमनली हम लोग डीबी ही मतलब कि डेटा डिफाइनर ही डेटा डिफाइन बाइट ही यूज करते हैं. It is used to define the 8-bit data. The DB is used to define the data. The numbers can be decimal, binary, hexa or ASCII format. For the decimal, we can simply denote it by D, capital D, after the decimal number. So if we are writing any decimal number, suppose we are writing 244, then after the 244 we are indicating capital D. So the computer is going to think or understand that this data is decimal number. Now, but using the B for the binary and H, that is for optional, hexa, H for hexa and B for binary for other requirements, and regardless of which is use, कौन सा यूज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और we can say the programmer के ऊपर डिपेंडेंट है. The assembler will convert this number, any number we are writing like in decimal, we are writing in binary, or we are writing in hexa. The assembler is going to convert that number into the hexa number. First thing, that is the convert that number into the hexa number. And to indicate ASCII, simply place the character in quotation marks. So in ASCII we need to place the quotation marks. Okay, now the assembler will again will assign the ASCII code for the character in quotation marks. The assembler will assign the ASCII code for the number of character automatically, and define byte, that is DB directive, is the only directive that can be used to define the ASCII string larger than 2 characters, and therefore it should be used for the ASCII data definitions. Either single or double quote can be around ASCII strings, and this can be useful for strings as well as, so which contain a single quote. So DB is also used to allocate memory in byte, or you can say size chunk, right? Next thing that we are going to see is assembler directives. The following are some of the more widely used directives of 805. Okay. Now these are the 3 most majorly used directives. First one, that is the ORG, or we can say origin.
एज वी ऑल नो ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन मतलब कि किसी भी चीज की शुरुआत करनी हो तो उसको हम बोल रहे हैं ऑरिजिन। तो यहाँ पे भी हमें प्रोग्राम की शुरुआत करनी है, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है, वी आर स्टार्टिंग अवर प्रोग्राम, सो वी आर स्टार्टिंग विथ org। सो द org डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द एड्रेस। सो यहाँ से हमारा ये एड्रेस से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोग्राम को बता रहा है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सो org मतलब ओरिजिन और वी कैन से बिगिनिंग। The number that comes after the org can be either in hex or in decimal. If the number is followed by H, capital H, you know, and now right now I think you understand what is by capital H. It is the decimal, and assembler will convert it into the hex number. Now some assembler use .org instead of org for the origin of directive. So you can either use org or you can directly use .org. Next one, that is equate. Now equate is quite simple, like this is used to define the constant without occupying a memory location. So whenever we need to define any kind of constant without occupying any kind of memory, that time we are going to use equate, or we can say EQU. Now, the equate directive does not set aside storage for the data items but associate with the constant value with the data label. So, when the label appears in the program, so कभी भी वो label आएगा प्रोग्राम के अंदर तो उसको समझ में आ जाएगा ये किसी constant डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली वो constant डेटा ले लेगा। लेकिन वो constant डेटा मेमोरी में कहीं भी स्टोर नहीं है, लेकिन वो क्या कहाँ पे है, इक्वेट में है। सो constant value will be substituted for the label. So जब भी लेबल्स को सर्च करेंगे, जब भी लेबल डिफाइन करेंगे, तभी डायरेक्टली वो कांस्टेंट वैल्यू लेबल से ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, that is and. Now another important code is and, END directive, and indicates the assembler to end the source. And it means end मतलब कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। So and is going to indicate that this is the end of our program, and after end if you are writing any kind of other code lines, the assembler is not going to listen. assembler को पता ही नहीं चलेगा कि end के बाद कुछ लिखा हुआ है, वो सुनेगा ही नहीं। assembler ने एक बार end देख लिया मतलब कि वहां पे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। So the end directive is the last in line of the 8051 program, and meaning that the source code anything after the end directive is ignored by the assembler, and some assembler use .and again and some use and. So you can also use and or dot. Now there are again certain rules of label in assembly language. So by choosing the label names that are meaningful, a programmer can make a program much easier to read and maintain. Okay, so it depends on the programmer. There are several rules that names must follow. First, each label name must be unique. So if the name is not unique, then the data is going to be copyrighted over and over again. So we need to keep each name unique. हर एक नाम अलग रखना चाहिए हमें। Then after, the name used for the label in assembly language programming consists of alphabetic order or alphabetic letter both upper and lower case, and मतलब कि कैप्स और स्मॉल्स में दोनों में लिखना है हमें, अपर एंड लोअर केस। द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 हम लोग डिजिट भी यूज कर सकते हैं, एंड स्पेशल कैरेक्टर सच एज क्वेश्चन मार्क, डॉट, then after @, then after dash, then after $sign, or you can say underscore and $sign. Then after the first character of the another important thing, that is first character of the label must be alphabetic in order. It should not be any number. First letter of the label must be alphabetical number. Okay, and in the other words, it cannot be any number, it should be a character, or it cannot be any number. Every assembler has some revised words that must not be used as a label in program. So assembler के पास भी कुछ अपने कुछ नाम होते हैं, तो हमें वो नाम नहीं लेने हैं, हमें उसके अलावा के अलग नाम डिफाइन करने हैं, ठीक है। So for most along the reserved word are numeric for instruction. In addition to the numerics, these are some other reserved words. Okay, 8051
फ्लैग बीट एंड द PSW रजिस्टर। नाउ हमें देखना चाह रहे हैं कि फ्लैग बीट्स क्या है और PSW रजिस्टर क्या है। सो लाइकवाइज एनी अदर माइक्रो प्रोसेसर, द 8051 हैज फ्लैग रजिस्टर टू इंडिकेट अरिथमेटिक कंडीशन ऑफ as a carry bit. Okay, the flag register in 8051 are called program status word. So the flag register क्या है कि कैरी बीट है, अगर आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है पता कैसे चलेगा, वो फ्लैग रजिस्टर से पता चलेगा। आपका जो नंबर है वो इवन है ऑड है या फिर उसके पास कोई कैरी है, मतलब कि अगर आप एक प्रोग्राम ऐसा लिख रहे हो जहाँ पे 8 बीट का 2 नंबर ऐड हो रहा है और उसका जो आंसर है वो 8 बीट से ज्यादा आएगा, सपोज कि उसका आंसर वो 9 बीट और 12 बीट में चला गया, तो वो बाकी का जो डेटा है वो उसको कैरी बोलेंगे। तो वो कैरी कहाँ पे स्टोर होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कैरी कितनी है। अगर आप माइनस कर रहे हो तो बोरो आएगा, तो बोरो कहाँ से आएगा वो कैसे पता चलेगा, वो फ्लैग रजिस्टर से पता चलेगा। और यहाँ पे इन 8051 वी आर कॉलिंग इट एज अ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड्स रजिस्टर। ओके, सो व्हाट इज PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड? So the PSW is 8-bit register. It is also referred to as a flag register. Okay. Although the PSW is 8-bit wide, only 6 of it are used by the 805. Okay, we are going to use only 6-bit. Other 2-bit are left. Okay, the unused bit are used under definable flag. 4 of the flag are called as a conditional flag, and meaning that indicate some conditions that result after the instruction is going to be executed. कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद की कंडीशन जो है वो जो 4 फ्लैग है वो डिफाइन करेगा। सो इसीलिए उसको बोलते हैं कंडीशनल फ्लैग्स। ओके, एंड these 4 are CY, that is for the carry, CY indicates for the carry, AC that is for the auxiliary carry, P that is for the parity, and OV that is for the overflow. So these are the 4 conditional flag registers. The bit of PSW.3 and PSW.4 are designated as RS0 and RS1 respectively and are used to change the bank register. The OSW.5 and PSW.1 bit are general purpose status flag bit and can by the programmer for any purpose. So programmer उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है अपने चॉइस पे। इन अदर वर्ड्स दे आर यूजर डिफाइनेबल, मतलब कि यूजर जो भी डिफाइन करना चाहता है वो अपनी तरह से डिफाइन कर सकता है। द प्रोग्राम द फॉलोइंग इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द 4-bit flag bit, or we can say 4 of the flag bit register of PSW. That is first one, that is CY, or we can say carry. Then after AC, that is auxiliary carry flag. F0, that is available for the user for general purpose, any kind of purpose, and user can define it on their own. RS1, that is resistance bank bit 1, and RS0, that is resistance bank sector for bit 0. Now OV, as we all know, that is for the overflow flag. This is going to be left unused, or we can say, and P, that is for parity flag. Now this is the table for which we can say the resistance bank selector, or we can say ones and zero, how we are going to select and what is the address that is going to be stored in that. So for RS1 and RS000, the register bank is 0 and the address is from 00H to 07H. Now the meaning of H over here is the hex code, right? The 01 RS1, that is 0 and 1, the answer is 1, register bank is 1 and the data is going to be 08H to 0FH. Now 10, the register bank is 2 and address is 10H to 17F, and RS1 11, the resistance bank is 3 and the address is from 18H to 1F. Now we are going to see all the different flag, that is carry flag, auxiliary flag, parity flag, and overflow flag. So first of all, sorry for the disturbance. So first one, carry flag, that is this flag is set whenever there is any carry out from the B7 bit, मतलब कि लास्ट बीट के बाद भी कोई डेटा रह गया है जो लास्ट बीट में स्टोर नहीं हो रहा है तो उसके आगे चले जाएगा, तो वो जो डेटा उसके आगे चला जाएगा
वो कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, लेकिन पता तो चलेगा कि यहाँ से डेटा आगे कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वो डिफाइन करेगा कि कैरी फ्लैग एक्टिवेट हो गया है। दिस फ्लैग बिट इज अफेक्टेड आफ्टर एन 8 बिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इट मींस बोरो। ओके, सो कभी भी बोरो करना है तो वो आगे से बोरो करके लाएगा। अगर कम वैल्यू की कम नंबर की वैल्यू है, उसमें से ज्यादा नंबर की वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे तो वो माइनस में आंसर आएगा, तो उसको बोरो करना पड़ेगा। कोई भी डेटा है तो बोरो करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो कैरी फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा। सो इट कैन बी सेट टू 1 और 0 डायरेक्टली बाय द इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन से भी ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज द ऑक्सिलरी कैरी। सो इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम D3 to D4 during the add, ADD it means add, addition, or sub मतलब subtractions operation, this bit is going to be set. So whenever the carry is from D3 to D4, whenever carry is from D3 to D4 during the addition or subtraction, if there is carry and this bit is going to be set. Set it means it is going to indicate 1, and reset it means it is going to indicate 0. So set means 1 and otherwise it is cleared, and this flag is used by instruction that perform DCD arithmetic. Okay, next one, that is the parity flag. Now the parity flag reflects the number of ones in the A register only. A it means accumulator register only, and if the A register contain an odd number of ones, then P is going to be set 1. Therefore P is equal to 0 if A is a even number of the ones. So A means accumulator. यहाँ पे क्या हो रहा है कि accumulator में अगर 1 नंबर है और ऑड नंबर है तो पैरिटी फ्लैग में 1 आएगा, ठीक है। और अगर accumulator में जीरो की लाइन में मतलब कि ऑड नंबर इवन नंबर है, accumulator में कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो उसके अंदर पैरिटी के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। Now last one, that is the overflow flag. So this flag is set whenever the result of the signed number operation is too large. सिंपल है कि ओवरफ्लो कब होगा, जब नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो दिस फ्लैग इज सेट व्हेनेवर द रिजल्ट ऑफ द साइंड नंबर operation is too large, causing the higher order bit to overflow into the signed bit. In general, the carry flag is used to detect the error in unsigned arithmetic operations. The overflow flag is only used to detect errors in signed arithmetic operations. मतलब कि जब भी डेटा ओवरफ्लो हो रहा है तो वो कैरी फ्लैग को तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो ओनली उसकी साइन है वो करेक्ट है नहीं है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो करेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, उसकी देखरेख करेगा, मतलब कि उसके ऊपर वॉच आउट करेगा ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ तक ही हमारा था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग आगे किस तरह से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, किस तरह से प्रोग्रामिंग मतलब कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।